हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजे इन्वेस्टर। होप यू आर एंजॉइंग योर संडे। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के मेगा आईपीओ की। ये 21,000 करोड़ का मेगा आईपीओ है जो जिसका बिडिंग का कल लास्ट डे है। सो आर यू स्टिल थिंकिंग वेदर टू सब्सक्राइब और नॉट? सो लेट्स सी सम की पॉइंट्स जो इसके फेवर में वर्क करते हैं, सम की रिस्क विच आर देयर. So government is selling around 22 crore shares here around at the price of 902 to 949 rupees, and the aim is to get 21,000 crores from the market. तो इसमें एंकर्स इन्वेस्टर्स लाइक बिग पेंशन फंड्स आर देयर, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर देयर विच हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड. तो इनसे 5600 करोड़ ऑलरेडी मिल चुका है गवर्नमेंट को. एंड द QIB कोटा इज़ देयर विच इज़ स्टिल एम्प्टी अराउंड 68%. And HNI जो big investors हैं and the retailers, they have filled their quota completely. So retailers, they are particularly very enthusiastic for this. एंड तो देखते हैं इसमें कुछ की फैक्टर्स जो वर्क करते हैं LIC के फेवर में. वन इज़ दे आर इट इज़ ऑफरिंग एट दी वेरी डिसेंट वैल्यूएशन. जो इनका एम्बेडेड वैल्यू है उसके हिसाब से एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल पीयर्स इट इज़ एट अ वेरी कंफर्टेबल वैल्यूएशन. तो अब देखते हैं. तो एम्बेडेड वैल्यू इज़ लाइक दी कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एसेट्स विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एंड जो भी उनका पॉलिसीज़ विच दे हैव ऑलरेडी सोल्ड उससे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है. सो दैट इज़ कंसिडर्ड इन टू एम्बेडेड वैल्यू. तो इनका एम्बेडेड वैल्यू इज़ अराउंड 5.4 lakhs एंड इट इज़ ऑफर्ड एट वैल्यूशन ऑफ 1.1 times टू द एम्बेडेड वैल्यू विच इज़ रीजनेबल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम जानते हैं इट इज़ अ वेरी बिग ब्रांड. दे हैव pan India presence and even abroad they have some offices, so that works in their favor. Lots of agents are associated with LIC जो उनके लिए काम करते हैं. So strong network, very trusted brand. They are into business for 65 years and believe me they have tons of assets. They have real estate assets. Their offices are at prime locations now in the cities. इसके अलावा they hold huge equity investments into various companies and they are much bigger than any asset management company if you say. And to yes, they are facing competition from the private sector, but they are also gearing up for that. So they are also getting into this, improving their digital services. So you can make your payments online. That is their receipts सब generation हो गया है, mail पे आ जाता है सब कुछ. So yes, they are improving from that perspective which works into their favor. एंड इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है. दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट टू द रिटेलर्स एंड द स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑफ अराउंड 45 रुपीज़ एंड पॉलिसी होल्डर्स को दे आर ऑफरिंग 60 रुपीज़. सो दिस प्रोवाइड्स यू अ काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो अगर कल को कुछ प्लस माइनस होता भी है मार्केट में तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि चलिए 45 रुपीज़ पर शेयर का आपको मार्जिन मिल रहा है. And if you talk about the key risks which are there for the LIC IPO, so one is inflation is there, and though RBI and the central banks they are increasing the rates. The if you see last week भी उन्होंने CRR and all rate hike किया था. So with that there was a fall in the markets because liquidity कम होगी markets में. So yes, that is something which could affect given its size. एंड रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है. सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं फूड सेक्टर में. दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. द QIBs दे आर नॉट वेरी मच पार्टिसिपेटिंग राइट नाउ. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. एंड एक चांस ये है कि इसमें एक फर्दर डाइल्यूशन हो सकता है आगे जाके 1 साल बाद, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सिर्फ 3.5% स्टेक सेल कर रही है. सो दैट यू नीड टू कंसिडर. तो फ्यूचर डाइल्यूशन जहाँ भी होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स आर लिटिल रिलेक्टेंट बिकॉज दे वुड बी मोर FPOs इन दैट केस. तो वो एक चीज़ है. एंड पॉजिटिव साइड पे आप देखते हैं तो इट वुड बी लिस्टेड विद अ मार्केट कैप ऑफ 6 लाख करोड़ रुपीज़. तो ये टॉप 10 में आएगी. एंड एज एंड व्हेन इट गेट्स इंक्लूडेड इनटू इंडेक्स, सो देयर वुड बी लॉट ऑफ फंड्स और ETFs होंगे जो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिन्हें, सिंस विच आर इंडेक्स बेस्ड. सो दैट कुड सी द बिग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन गोइंग अप इनटू द काउंटर. So considering this, if you see all the plus minus about the IPO, so if you have a mid to longer term, one can definitely think about it. So personally I have invested from my family accounts considering the जो retail discount मिल रहा है 45 rupees per share का. So that really works into the favor. So yes, I have applied. आप भी analyze करिए and if you find it comfortable, so tomorrow is the last day, just go and bid for it. एंड ग्रे मार्केट करेंटली इट इज़ कोटिंग अबाउट 40 रुपीज़ और सो. तो थोड़ा डिप मार सकता है बिकॉज येस मार्केट्स आर करेक्टिंग 1000 पॉइंट. इट्स लाइक नॉर्मल दीज डेज. अब देखिए लास्ट 2 वीक्स में. सो येस
If you are thinking from mid to longer term, yes, definitely it's a good thing. Hope you like this information. Like, share, subscribe. Thank you.